Hello friends, I am MD Harun Rashid and it's my YouTube channel Harun by John. Today in this video I will discuss 21 very important ecology MCQ questions from the chapter Ecology, Organism and Population, especially for NEET and also all other biology based examination, competitive examination. So don't be late, let's start. First question says, transition zone between the two vegetation region is named as ecotone, ecosystem, ecocline, ecotype. The transition zones means, look at this picture, this is one community and this is one community, or that means this is one vegetation and this is on another vegetation. So this the region between two vegetation is a narrow range space that is called ecotone. Another term is ecocline. What is ecocline? The correct answer is ecotone. Here another word is ecocline. What is ecocline? A gradual continuous change in environmental condition and species composition across landscape. That means this is the ecocline. This region is called ecocline. Ecotone is a narrow range space, but ecocline is a large space, large transitional space where the environmental condition changes in gradual condition. And what is the difference between ecotone and ecocline? In ecotone, there is a narrow range region, but in case of ecocline, there is a wide region. Species composition change gradually over distance. Here species compositions are changed. Here the common species are present in ecotone, but in case of ecocline, the species composition change in gradual increase the distance. Okay, here यहाँ पे some species होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे different species because it's a large area. This was ecocline. And what is ecotype? Ecotype means it's a population species of race that is adapted to local environmental condition. Also called ecotype is also called eco-species. Ecotype is also called eco-species. Here the organisms are adapted to local environment. Ecotype occur when plants adapt to different environmental conditions with different size appearance. That means genetic variation within species adapted to local environment. An ecosystem means group of population is community and group of community is called ecosystem. The ecosystem means where the biotic and abiotic factor dependent on each other. That is called ecosystem. Question number 2. Factor governing the earth's surface is topographic, biotic, edaphic and temperature. The factor governing the earth's surface, जो फैक्टर इस अर्थ सरफेस को मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिक. तो व्हाट इज टोपोग्राफिक मींस फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड. टोपोग्राफी मींस फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड. फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड लाइक माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन एरिया, mountain, desert, plain, etc. that represent the different environmental condition. So different type of organism are survive on this earth. Okay, अगर लैंड का कंडीशन डिफरेंट होगा, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे लेक है, कहीं पे
प्लेन है, कहीं पर डिजर्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा उसका एडेप्टेशन कैपेबिलिटी भी डिफरेंट होगा. अनदर term edaphic. Edaphic means soil physiology. Soil physiology. Soil physiology means soil physiology determined by soil pH, soil acidity, alkalinity, and texture, minerals, etc. factors determine the soil physiology. Biotics means living temperature. The correct option is topography. Question number 3. Free floating organism on sea surface is called plankton, benthos, nectons, and sea animal. The free floating organism is called plankton. This is free floating organism. Phytoplankton and zooplankton. Benthos means the lower organism that survive in the floor portion of ocean or lake or pond. Nectons mean the large organism that float in the middle area of the pond, ocean or lake. Sea anemone is a organism. Question number 4 says the study of relationship between individual species and environment. The individual species and environment is called autoecology, and synecology, ethnology. That is autoecology. Autoecology means the study between the the study of single organism and their relationship to the environment, and his relationship to the environment. So then what is a synecology means? Synecology means group of organisms or all organisms, study of all organisms and their relation with the environment. Ethnology means science of life, a scientific study and comparison of human race. Ethnology means scientific study and comparison of human race is called ethnology. Humus is present in middle portion of the soil, top portion of the soil, sea depth, deep inside the soil. Here you can look the soil profile. The soil has 5 different regions, that O horizon, A horizon, E horizon, B horizon, C horizon. The O horizon means loosely and partially decaying organic matter, जहाँ पे different type of organic matter are deposited on the surface of the soil. Organic matter means अगर कोई organism dead होता है तो वो कहाँ पे पड़ा रहता है, ऊपर पड़ा रहता है, या फिर leaf or flower or any other organic material present on the upper side of the soil. So this soil is loose and partially decaying organic matter. The A horizon जहाँ पे जो organism यहाँ पे dead होता है उसका जो minerals होता है वो आके इस area में जमा होता है. That is called humus region or A horizon. So the O horizon and A horizon is called top soil, upper side. E horizon, zone of elevation and leaching, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन उतना नहीं होता है, जहाँ से मिनरल एंड न्यूट्रिशन नीचे की तरह लीचिंग हो जाता है. सबसॉइल बी, accumulation of clay,
ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अबव, यहाँ से लीचिंग होके यहाँ पे आकर डिपोजिट होता है, दैट इज बी होरिजन, दिस कॉल्ड सब सोइल. एंड सी होरिजन पार्शियली ऑल्टर्ड पेरेंट मटेरियल, दैट मीन्स यहाँ पे छोटा छोटा रॉक प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लार्ज रॉक प्रेजेंट होता है, अनविदरिंग. सो द ह्यूमस रीजन इज टॉप सोइल, इज कॉल्ड टॉप सोइल, टॉप ऑफ द सोइल, top portion of the soil. 6 number question says an association of individuals of different species living in the same habitat, different species living in the same habitat having functional interaction, different species living in the same habitat and having functional interaction is called as biotic community. Community means a group of population is called community. Suppose there is a single organism. Group of this organism is called population. When this population or different population are present in a definite geographical area in definite time, this is called community. This is community. जहाँ पे different organism present रहता है और वो their interaction each other. This is called biotic community. So what is the definition of population order? Population orders means number of people residing in a specific and geographic area. Number of population orders mean number of population living in a specific geographic area. This is called population order. What is ecological niche? Ecological niche is specific role and position of organism within an environment encompassing habitat, resource use and interaction. एक organism environment जहाँ पे रहता है, that is जिस habitat में वो present है, उसके उस habitat में उसका role क्या है and environment का उसके ऊपर effect क्या है. This interaction is called ecological niche. An ecosystem means here ecosystem, a system where biotic and abiotic environment, biotic organism and abiotic factors are interact each other and they both survive. 7 number question says a community is defined as interacting population, a group of birds, an interactive ecosystem, a collection of species. तो community means जहाँ पे group of population are present जो each other interact with each other, that is interacting population. It's called community. Question number 8 says maximum absorption of rainfall water is done by tropical deciduous forest, tropical evergreen forest, tropical savanna and scrub forest. So here you can see this portion, this is a represent of different biomes in the environment. तो biome जहाँ से इस साइड से यहाँ इस साइड रेनफॉल ज़्यादा होता है, इधर रेनफॉल कम होता है. यहाँ पे टेम्परेचर सबसे गर्म होता है, ऊपर में टेम्परेचर सबसे कम होता है. तो अगर ट्रॉपिकल, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन मीन्स अगर दिस इज अर्थ, इफ दिस इज अर्थ, द ट्रॉपिकल रीजन मीन्स द मिडल पोर्शन where sunlight continuously fall. Okay, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर रहता है? दिस रीजन, दिस ट्रॉपिकल रीजन. जितना ऊपर जाएगा वहाँ पे सनलाइट उतना रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा. इसलिए इन पोलर रीजन देयर इज लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर. तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ जितना ऊपर जाओ तुम टेम्परेचर उतना कम होता है. दैट इज हाई टेम्परेचर एंड दिस इज लो टेम्परेचर. अब इस रीजन का, ट्रॉपिकल रीजन का, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, यहाँ सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कम रेनफॉल होता है. तो सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है कहाँ पे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिस रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है. सबसे कम कहाँ होता है? इस डेजर्ट रीजन में. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया बिकॉज दिस इज सावाना just before the desert region.
Question number 9. Desert, grassland and forest and tundras are example of biomes, biogeographical area, ecosystem and biosphere. So this is the example of biomes. This is the example of biomes. These walls are tropical forest, temperate forest, subpolar polar region, यहाँ पे tundra रहता है, जहाँ पे boreal forest, grassland, chaparral, deciduous forest, desert, tropical rainforest, seasonal forest, scrubland, savanna, desert, all are biomes. So what is the difference between biogeographical area? Biogeographical area, also called realm or ecozones, are large areas defined by the unique evolutionary history and species composition of their organism, often due to historical separation and isolation. Now, in India, there are 8 biogeographical regions: Trans-Himalayan region, Himalayan region, desert region, semi-arid region, Gangetic plain, northeast, Deccan Peninsula, Western Ghat, Eastern Himalayan coast region, and island region. These also are biogeographical region of India. Ecosystem, biosphere. The group of biome is produce the biosphere. There are 3 types of biosphere present on Earth, that is hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Next question says, 10 number, in xerophytic plant, xerophytic plant means water scarcity. Water scarcity, जहाँ पे सोयल में वाटर स्कार्सिटी रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, xerophytic plant ग्रो करेगा. तो वाटर स्कार्सिटी रीजन ग्रोन द xerophytic plants. उसका लीव्स क्या होगा, xerophytic में वो इसका हर वो एडाप्टेशन ऐसा होगा जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस होगा. xerophytic प्लांट का मेजर टारगेट ही रहेगा वाटर लॉस कम हो. तो वाटर लॉस कम होने के लिए लेदरी सरफेस जरूरी है. लार्ज सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा एक लीफ का या स्टेम का, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑक्सीक्यूटिकल्स, डेफिनेटली उसका लीफ जो होगा, लीफ के ऊपर एक ऑक्सीक्यूटिकल रहेगा. एंड सांकेन स्टोमाटा. सांकेन स्टोमाटा मीन्स नॉर्मली क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, अपर सरफेस और लोअर सरफेस. बट in case of xerophytic plant, this is a special type of adaptation where the stomata present just inside the leaf surface, थोड़ा सा surface से अंदर होता है, and that is covered by hair-like structure. Okay, so why it is done? Because lower rate the transpiration, because stomata do not directly contact to environmental factor like humidity, like temperature, like wind, so transpiration will become low. The correct option is 1, 3 and 4, C. Question number 11 says, हाइड्रोफाइटिक आर क्या है, हाइड्रोफाइट्स में जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स by aquatic habitat are characterized by leaf reduced to spines. नो, और लीफ कहाँ पे रिड्यूस होता है, स्पाइन में, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी द डेजर्ट रीजन में, दैट ओपनसिया. वेल डेवलप्ड vascular tissue, no, because well developed vascular tissue are present in xerophytic plants or desert plant, because here water level is very low. Okay, so they efficiently absorb water from soil. But in case of hydrophytes, जहाँ पे एक प्लांट ग्रो करते हैं एक्वाटिक पानी में, तो पानी अवेलेबल है, तो पानी का अब्जॉर्ब करने के लिए उसका मस्कुलर बंडल उतना डेवलप की कोई जरूरत नहीं है. वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू क्या करते हैं, they provide mechanical support. In aquatic plant, the plant float normally in water, so no rigid stem is required here. So no
mechanical tissue are developed. Increasing in parenchyma, definitely. Parenchyma is the parenchyma where the air chamber is present. Air chamber is present in parenchyma. अगर एयर चैम्बर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, उसका जो लीफ और स्टेम जो है वो इजीली वाटर में फ्लोट करेगा. दैट इज इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स एयर पेरेन्काइमा इज रिक्वायर्ड. क्लास क्वेश्चन नंबर 12. प्लांट रिक्वायरिंग लो लाइट इंटेंसिटी फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए वो सबसे कम लाइट इंटेंसिटी यूज करते हैं. दैट इज हेलियोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड शियोफाइट. The definite answer is ceophyte. Ceophytes mean the water shade loving animal. Heliophytes means not animal, plants. That is high intensity of light. High intensity of light. Pteridophyte and bryophyte, also called fern and moss, these are example of plant division. Pedology refers to study of soil, study of population, study of fodder, study of fossils. The study of soil is called pedology. The study of population is called anthropology. But demography, study of population. Study of water is called hydrology. Fossils is called paleontology. Question number 14 says, match the following and select the correct option. Bears, snail, zooplankton and seeds. Diapause, hibernation, dormancy and activation. The bears जो actually hibernation means winter sleep. The bear shows winter sleep, hibernation. Snail shows diapause. No, snail activation. Sorry. As the snails represent activation. Activation means summer sleep. And zooplankton shows diapause. Diapause means जहाँ पे physical activity reduce the physical activity. Like respiration, like metabolism are reduced in unfavorable condition. All are done in unfavorable condition. And seeds shows dormancy. The correct action is 4, 1, bears 2, hibernation, snail 4, C1 and D3. B is the correct option. These alls are done when unfavorable condition occur in any organism's life. Question number 15 says, the aquatic organisms that can actively swim at will against the water current. जो water current के against में float करते हैं, that is called न्यूस्टोन species. न्यूस्टोन species means जो water surface में रहते हैं, एकदम water surface upper surface में रहता है, that is called न्यूस्टोन. Organism that lives at the interface, example fish, jellyfish, turtle, etc. Plankton means free floating organism. नेक्टोन मीन्स जो लार्ज ऑर्गेनिज्म जो मिड सरफेस में रहता है, बेंथोस जो एकदम लोअर सरफेस में रहता है.
16 number question says major ecological community of plants and animals extending over large natural area is known as bioregion, biome, biosphere and biota. So what is biome? सब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है. इंडिविजुअल के बाद ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन. पॉपुलेशन इज कॉल्ड यूनिट ऑफ इवोल्यूशन. ओके. एंड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जहां पे इंटरेक्शन होता है दैट इज अ कम्युनिटी एंड ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोसिस्टम and group of ecosystem is called biome. इस biome है that is tropical, temperate, subpolar, polar region सब biome होता है. And group of biome is called biosphere. Okay. That is the sequence. The major ecological community of plants and animals extending over large natural areas known as biome. What is bioregion? A geographical area defined not by political boundaries but by ecological system. एक अर्थ के ऊपर एक एरिया है जो politically not determined but determined by ecological system or distribution of organism. That is called bioregion. Biogeographic region. Say for example, water region, mountain region, and ecosystem, etc. Biota. What is biota? Biota is the animal and plant life of particular region. The plant or animal life in a particular region is called biota. Question number 17 says -1 degree centigrade to 13 degree centigrade annual variation in the intensity and duration of temperature and 50 to 250 centimeter annual variation means rainfall is precipitation account for the formation of major biome. कहाँ पे टेम्परेचर -1 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और रेनफॉल कितना 15 to 25 सेंटीमीटर. उस रीजन का नाम क्या है? दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉरेस्ट. फर्स्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स हॉट and extremely cold in polar region. Clear? The temperate forest means medium hot, but here temperature is very low, -1 degree to 13 degree centigrade. तो डेफिनेटली कहाँ पर होगा? दिस कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हिल के ऊपर रहता है, यहाँ पे साइकास, जहाँ पाइन लाइक ऑर्गेनिजम्स, पाइन लाइक ट्रीज आर ग्रोज, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. और ग्रासलैंड मीन्स ग्रासलैंड जो होता है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. Question number 18 says population termed R strategies are two type R selected species and K selected species. R selected species जहाँ पे कि population का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा होता है. नंबर 1, पॉपुलेशन का पेरेंटल केयर बहुत कम होता है. क्लियर? स्मॉल बॉडी साइज, शॉर्ट लाइफ स्पैन, अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एवं हाईएस्ट मोर्टेलिटी इन जुवेनाइल लाइफ स्टाइल. जो जब वो मोर्टेलिटी रेट में रहता है सबसे हाईएस्ट होता है और डेथ रेट भी उसका बहुत ही हाईएस्ट होता है. तो आर सेलेक्टिव स्पीसीज आर यूजुअली पायनियर स्पीसीज, हैव J-shaped growth curve, have type 3 survivorship. This type 3 survivorship. So question number C, the right answer is D. Okay, R selected means जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों बहुत छोटा होता है, लाइफ स्पैन बहुत कम होता है एंड अर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आता है. ओके, एंड देयर पेरेंटल केयर बहुत कम होता है. दैट इज कॉल्ड आर सिलेक्टेड स्पीशीज. डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड फिशेस. बट के सिलेक्शन स्पीशीज क्या होता है? जहाँ पे लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, पेरेंटल केयर ज़्यादा होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट में बाद में आता है. दैट इज कॉल्ड के सिलेक्टेड स्पीशीज. के सिलेक्टेड स्पीशीज शोज टाइप 1 survivorship. Okay, type 2 and 3
specially by our selected species. Question number 19 says, if the rate of addition of new members is proportional to the natality. Natality means birth rate. Birth rate. Natality means birth rate. Then the graph obtained will exhibit zero population growth, decline growth, exponential. If the rate of addition of new member, मतलब जहाँ पे नॉर्मल बर्थ रेट होता है उसके साथ पे और एक एडिशनल ऑर्गेनिज्म साथ ऐड कराओगे तो क्या होगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व दिखाएगा तब. दैट मीन्स जे शेप ग्रोथ कर्व. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मीन्स जे शेप ग्रोथ कर्व. Question number 20 says the carrying capacity of population is determined. Carrying capacity means maximum capacity of nature to carry organism. That is limiting resources. मतलब carrying capacity के बाहर नेचर में रिसोर्स और शेल्टर नहीं है. That is called limiting resources. The question number 21 says two organisms are showing commensalism. Type of interaction. In such relationship, one is benefited. Commensalism means जहाँ पे एक benefited होगा और दूसरे का harm भी नहीं होगा और benefit भी नहीं होगा. Say for example, this is shark. As the small fish are live around the shark. इससे क्या होगा, shark का कोई benefit नहीं है इसमें. Shark zero, उसका benefit और harm कुछ भी नहीं है. मगर इस लार्ज फिश के पास अगर ये रहेगा तो दूसरा एनिमल उसको अटैक नहीं करेगा. नंबर 1. नंबर 2, शार्क जब फीडिंग करेगा तो उसके मुंह से जो एक्स्ट्रा फूड आ जाए वो बाहर गिर जाएगा, वो ये लोग खा लेगा. दैट इज दे बेनिफिटेड फ्रॉम द शार्क बट शार्क इज नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम देम. दैट इज 0+. तो वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. So this 21 MCQ question are explained here. अब लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.